when your IH will be equal to V upon R in plus RH. Is it fine to all of you? RH. And you know RH is equal to RN. RH is equal to RN. So we can write IH is equal to V upon 2RN or 2RH, whatever. So we can write IF is equal to V upon RH, means because IF is equal to twice of IH. So it will be twice of this and twice of this. So that will lead to this relation. Now current through the shunt resistance. Current through the shunt resistance. This is your shunt. Current. And this is your battery current. And this is your meter current. So I'm writing KCL here. So it will be ISH is equal to IF, that is full scale current, minus. So this equation we have written for the worst condition, for the maximum current condition. In general, we can write ISH is equal to battery current, the current drawn from the battery, minus current through the meter. In the worst condition, what we want, when the maximum current, that is IF, is drawn from the battery, then at that time we want that the full scale deflection current through the full scale deflection current should flow through the meter, must flow through the meter. We are making it, we are ensuring it by writing this equation, and remaining amount of current should go through the shunt. We want such kind of shunt. We want such kind of shunt. When under maximum current condition, this is your maximum current condition. So obviously full scale maximum current will be drawn from the battery, and we want to design our shunt in such a way, or shunt and series resistance in such a way that under this condition, when maximum current is drawn from the battery, this maximum current drawn from the battery, then this should be maximum allowable current through the meter, that is your full scale deflection current through the meter. And remaining current should flow through the shunt. It should flow through the shunt. So we should design a shunt resistance in such a way. So this is what I had written here. So that shunt resistance is equal to maximum current drawn from the meter, from the battery, and minus maximum current that is allowed to flow through the meter. And since these two are parallel, so we can write your shunt and meter. So we can write ISH into RSH is equal to IFM into RN. ISH into RS, ISH into RS is equal to IFM into RN. These two are parallel. ये शंट रेजिस्टेंस है और ये मीटर रेजिस्टेंस, इसके थ्रू फ्लो कर रहा है IFM, इसके थ्रू फ्लो कर रहा है ISH. So that's what I had written. ISH. Now we using these two equations, so we can write RSH is equal to this. Then we'll write this parameter here. Put
the, sorry, this the denominator ISH will put this. So it will become this. Then as RSH is equal to IFM, then we can write IF is equal to. Why we are doing all these things? Because if you look upon this equation, many things you are not, you don't know. Only thing you know are these parameters. So we want that our RSC and RSS expressions should be defined in terms of these design specifications, and that's what we are trying to. And this is the design condition. This equation is defining the design condition, मेन ऑब्जेक्टिव. सो वी आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म RSH की यहाँ पे आ गए, लेकिन आपको ये मालूम है कि हमें IFM मालूम है, RM मालूम है, लेकिन ISH नहीं मालूम है. सो वी आर ट्राइंग टू ट्रांसलेट इट इनटू द नोन टर्म्स. तो हमने ISH को लिख दिया IF माइनस IFM, और IF को हमने लिख दिया V अपॉन RH. तो ये बैटरी वोल्टेज हो गया, ये हाफ स्केल डिफ्लेक्शन रेजिस्टेंस हो गया, ये मीटर, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन मीटर करंट हो गया, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन मीटर करंट हो गया, ये मीटर है. तो अब नाउ वी नो the relation, the formula to calculate RSH in terms of the specific parameter of the. Now we further simplified it, and then we are able to get this. So this is the formula for RSH. This RSH will ensure this condition. This is the design condition or objective, design objective. ये जो equation है ये हमारा design objective है. ये equation will ensure, this equation will ensure this design objective, because this equation is derived from this equation, this design objective. So this is your design objective, and this equation is satisfying this design objective. अगर ये shunt resistance हम इसमें लगाएंगे तो it will ensure that when maximum current is drawn under maximum current condition, then this shunt resistance will allow only the full scale current through the meter, and remaining current will get passed through the shunt resistance. So this is what. Now the second parameter is your series resistance parameter. So from this equation, we can find RSC is equal to RH minus RSH. अब RSH हमको नहीं मालूम है, मीन्स इट इज नॉट लाइक दैट, मीन्स नहीं, RSH हम मालूम करना चाहते हैं, स्पेसिफाई करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजाइन पैरामीटर. तो हमने क्या किया कि ये RSH की वैल्यू यहाँ लिख दी, एंड इसको सिंप्लीफाई करके यू कैन सी ultimately we are having expression for REC also in terms of the specified design parameters. So this way, if you calculate the value of series resistance, value of shunt resistance, then your meter will behave according to your requirement for the given specification. Obviously, अगर आप मीटर चेंज कर देंगे या बैटरी वोल्टेज चेंज हो जाएगा तो आपका फिर सारी डिजाइन आपकी इनवैलिड हो जाएगी. So this is how series type ohm meter is designed. If anybody is having any question, you can ask, please. जी बताइए. हाँ भाई, कोई क्वेश्चन है आपके पास? कोई चीज ऐसी है जो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? Then I'll make you understand. I'll revise. I'll try to. जी. हाँ या नहीं, कुछ तो बोले भाई. जी, क्या कह रहे हैं आप? Should I proceed? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now I took one example. Things will be more clear when you'll solve this problem. So this is example for design series type of ohm meter.
Movement to be used requires 0.5 milliampere for full scale deflection. Actually this is D-Arsenal movement, that is your permanent magnet moving coil instrument, उसका full scale current दिया हुआ है and has an internal resistance of 50 ohm. तो ये जो मीटर यूज किया उसकी स्पेसिफिकेशंस है ये. The internal battery has voltage of 3 volt. The desired value of half scale resistance is 3000 ohm. Calculate the series and parallel resistance RSC. तो आपको देखिए, आपको जो है वो डिजाइन स्पेसिफिकेशंस दे दी गई हैं, जो जो आपको मीटर यूज करना है उस मीटर का फुल स्केल. तो ये आपको IFM दिया हुआ है, ये IFM दिया हुआ है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द मीटर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल. और ये आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है RM, और इंटरनल बैटरी वोल्टेज दिया हुआ है V, और आपको RH दिया हुआ है. अब ए पार्ट में ये कह रहा है कि आप पैरेलल रेजिस्टेंस और सीरीज RSC RSH की वैल्यू कैलकुलेट करें आप ना. ये हमने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ आप इसको कैलकुलेट करें. ये इक्वेशंस हैं RSC की और ये RSH की. तो RSH कैलकुलेट करिए. आई वांट ऑल ऑफ यू शुड कैलकुलेट इट. जी कैलकुलेट करें, RSC और RSH की वैल्यू कैलकुलेट करें. इसको इसको आप स्क्रीन कैप्चर कर लें, इसका स्क्रीन कैप्चर कर लें, स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन कर लें, पेस्ट कर लीजिए, उसमें वर्ड फाइल में पेस्ट कर लीजिए, और फिर इसको कर लीजिए और इसको कर लीजिए, and then you calculate the value. Tell me the values. This is the trivial part of your problem example. Now respond your roll call. By the time you will calculate these values, I'll take your attendance. Roll number 1, roll number 2, 10 ohm. 10 Okay. ohm. And series resistance? 2975, 2009. Okay, let me check. So here you can see that for these values we calculated. So shunt resistance is coming out to be 50 ohm. Why 10 ohm? I don't know. Sir, 50 ohm, sir. It is 50 ohm. And then this is a formula based this thing. So from this formula, 2975 is correct. I don't know how you are getting one correct and one incorrect calculation answers. Now this is the trivial part, formula based part. So you so it means that you design. Now second part, the range of values of RSH if battery voltage may vary from 2.7 volt to 3.1 volt. So in this case, means this is the possibility. Means this is called excitation variation. This is an example of excitation variation. So you see, this method is also not not you can say that independent of the variation in excitation. So your battery voltage, obviously if you are using battery, so your battery voltage may vary because of the discharge. So if it is not at that voltage, which is that is 3 voltage for which you have designed it, suppose it is varying from 2.7 volt to 3.1 volt, then what? Oh, so this is the meaning that by varying RSH we can make the compensation for the change. So anyway, we have to find out the RSH value range. अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि RSH की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर ली. दिस इज कमिंग आउट टू बी 50 ohm. आप ये चाहते हैं, यू वांट दैट आपको उतना ही डिफ्लेक्शन मिले. आप समझ रहे हैं?
आपने किसी V के लिए ये इंश्योर कर दिया कि यू आर गेटिंग फॉर डिफरेंट RX व्हेन एवरीथिंग इज फाइन, RSH की वो वैल्यू, RS जो डिजाइन किया था सब चीजें वही है। तो फॉर RX obviously you will get for given RX you'll get certain deflection here depending upon the amount of current flowing through the meter. Now there is one imperfection that suppose your V value is mean आपने इसको डिजाइन किया 3 वोल्ट के लिए, now your V value has reduced to 2.5 volt. तो सपोज ये जो है सपोज RX की वैल्यू है 100 ohm. Suppose I'm just taking one example. Suppose RX is 100 ohm. When everything was fine, तो आपका मीटर जो डिफ्लेक्शन दे रहा था वो सपोज आपको दे रहा था 25 डिग्री, और 25 डिग्री पे आपने 100 ओम लिख रखा था, है ना। 25 डिग्री के डिफ्लेक्शन पे आपने यहाँ 100 ओम लिखा हुआ था। अब एवरीथिंग इज फाइन, अब ये जो है डिस्चार्ज हो गई बैटरी और ये 2.5 हो गया। अब क्या हो जाएगा जी बताइए, तो आपके रिस्पांस में क्या प्रॉब्लम आएगी? सर कम दिखाएगा सर response। कम दिखाएगा, आपका डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, है ना। और वो सपोज करो कि अब डिफ्लेक्शन जो है, क्योंकि जब ये कम हो जाएगा तो यहाँ करंट जो है फॉर सेम रेजिस्टेंस फॉर सेम इनपुट योर करंट विल गेट रिड्यूस। जितना पहले फ्लो कर रहा था जो कि 25 डिग्री, अब सपोज कर कम होकर 20 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ऑल्दो योर रेजिस्टेंस इज सेम। और ये 20 डिग्री पे आपने 75 ओम लिख रखा है, यहाँ पे कैलिब्रेट किया हुआ है 75 ओम। तो ऑब्वियसली 100 ओम जो है वो 75 दिखा रहा है, इसका मतलब है कि मीटर में एरर आ गई। आपने जो मेजर किया वो एरोनेस 25 ओम का एरर आ गया, है ना। किस वजह से आया? ये इसके एक्साइटेशन वेरिएशन की वजह से आया। अच्छा चलिए, आपको ये मालूम भी हो गया कि साहब मीटर सही, क्योंकि आप टाइम टू टाइम क्या करते हैं कि नॉन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, तो मालूम हुआ कि मीटर सही काम नहीं कर रहा है और इसका जो है बैटरी वोल्टेज जो है, बैटरी जो है वो गड़बड़ हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है। तो आपको ये चांस है, अगर आप उतना ही डिफ्लेक्शन लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे इस मीटर में? मतलब 2.5 वोल्ट पे आप यू वांट 25 डिग्री डिफ्लेक्शन, तो आप क्या करेंगे? सर RSC की वैल्यू कम कर देंगे। RSH की वैल्यू कम कर देंगे, है RSE सर सीरीज रेजिस्टेंस कम कर सर देंगे। आर RSC हमने इसमें देखिए सेम वैल्यू ली है, RSC को हम नहीं छेड़ रहे हैं, हम सिर्फ RSH की वैल्यू को छेड़ रहे हैं। तो RSH की वैल्यू को क्या करेंगे, कम करेंगे ज्यादा करेंगे? सर कम कर देंगे। भाई कम कर देंगे तो और करंट इधर से फ्लो करेगा, इधर से, तो इसमें हमें ज्यादा कर करंट देंगे। बढ़ाना है, इसमें करंट बढ़ाना है मीटर में, तो हम RSH की वैल्यू बढ़ा देंगे। बात समझ में आ रही? यस सर। जब वोल्टेज कम होगा तो हमें RSH की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी टू सो दैट आवर मीटर कैन हैव सेम डिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसी तरह से अगर एक्साइटेशन ज्यादा हो गया, सपोज करिए कि 3.1 वोल्ट हो गया जैसे प्रॉब्लम में दी हुई, तो जाहिर सी बात है कि अब फॉर सेम रेजिस्टेंस योर डिफ्लेक्शन विल बी मे बी 26 डिग्री और 27 डिग्री, ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा इसके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये शंट रेजिस्टेंस घटाना पड़ेगा। तो ये हमने सिर्फ इसको आपको इसलिए समझाने की कोशिश की है कि आप जो है बिफोर कैलकुलेशन यू शुड फाइंड आउट कि आपको ये मालूम है कि अगर ये 27 वोल्ट हो गया तो हमें 50 से कम करना पड़ेगा, और अगर 3.1 हो गया तो हमें 50 से ज्यादा करना पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन करके कोई चीज उल्टी आ रही है तो यू कैन फाइंड। तो ये कॉमन सेंस है, तो बाकी फॉर्मूला लगेगा। तो यू सी वी आर एबल टू कैलकुलेट RSH एंड RSC। अब हमने कहा कि वैल्यू ऑफ RSH व्हेन द बैटरी वोल्टेज इज 2.7 वोल्ट, तो RSH ये फॉर्मूला है RSH का। तो इसमें हमने बैटरी वोल्टेज को चेंज कर दिया, 3 से 3 जब किया था तो 50 ओम आ रहा था, 3 से हमने इसको
2.7 कर दिया. When you will make it 2.7, then you can see that कि आपको बढ़ाना पड़ा. ये बढ़ाएंगे then you will get the same. तो ये compensation हो जाएगा आपका for the discharge of your battery. इसी तरह जब आप बढ़ाएंगे, वोल्टेज को बढ़ा देंगे, तो your resistance will come out to be less than. So that's what I try to means. If you are having the common sense, then you can already anticipate that in the lower case you have to increase the shunt resistance, and in higher case we have to decrease the shunt resistance, and same thing. How much, that is another thing that you have to calculate. So this we are able to calculate, and if it is as per your expectation, then your results are there. So this is how it is done. So if anybody is having any query regarding this problem, you can ask. जी, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज ऐसी जो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देन I'll make you understand. I'll help you. नहीं, आगे बढ़े. यस सर. सर हेलो. जी बोलिए. सर क्वेश्चन में लिखा है कि यूज वैल्यू ऑफ RAC कैलकुलेटेड इन ए. सो RAC का सर वैल्यू इसमें पुट ही नहीं किया, हम लोग फायदा क्या हुआ? नहीं, RAC की जरूरत नहीं है, लेकिन RAC को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, then many thing means this is because it is assuming that, because if you disturb RAC, sorry, RAC को हमें डिस्टर्ब नहीं करना. RAC को जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ए पार्ट में, विल कीप एज इट इज. ओके सर, ठीक है ना, ये हमने 50 ओम इसको रखना है, क्योंकि अगर आप RAC डिस्टर्ब करेंगे तो फिर तो RSH भी डिस्टर्ब हो जाएगा, इवन फॉर द 3 वोल्ट. बात समझ में आ रही? यस सर. तो we are not supposed to fiddle with the initially designed value of RSH. Only by changing the RSH value we can make the compensation for variation in excitation. है ना, RSC को अगर आप चेंज करेंगे तो RSH को भी फिर आपको दोनों चीजें चेंज करेंगे. So there is no need for such kind of situation. We are not required to disturb the RSC. Okay, that's what it is written. ये भी किया जा सकता था कि आपको RSC को डिस्टर्ब की ये वैल्यू है, तब आप RSH वो करिए, तो obviously RSH value will also change with the RSC also. Now another type of ohm meter is your shunt type volt ohm meter. So circuit is different, you see here, and why it is called shunt type? Because you see this is your input terminals. So in this case it is not series type. In this case you see if you are making it open, even then your current is flowing in the circuit, and that's why this switch is there. This switch was not required in series type ohmmeter, because when there is no resistance, input resistance, when there is no input resistance, then whole circuit is open. But this is not the situation here. Here in this case, you see, even if we remove it, your circuit will flow in this loop. So that's why this situation is required, switch is required. Now, again, if we talk about the extreme condition, so under what condition maximum current will flow through the meter? जी बता सकते हैं? Yes, sir, what is the question? Infinite होगा. Under what condition, for what Sir, open loop condition. ओपन लूप कंडीशन में देखिए, हाँ, ओपन लूप कंडीशन में मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू द मीटर, है ना, एंड in a short circuit obviously no current will flow through the meter. Most of the current will flow through the shorted terminal, है ना, because your meter is shorted through the short circuit. So the most of the current will flow this way. So the minimum or zero current will flow. So now in this case, when Rx is zero, then your deflection is also zero, because no current will flow through the meter. And when
Rx is infinite when it is open, then all the current will flow through the meter, so it will give you full scale deflection. So in this case, design is very simple. Can you tell me how will you design for maximum current condition? For maximum current condition, we have to make sure when it is open circuit is the maximum current condition, then we have to make sure that Im should be equal to IF, maximum allowable full scale deflection current should flow. तो ये कैसे इंश्योर करेंगे? ये आरएससी की वैल्यू है ना, ये इक्वेशन है. दिस इज द ओनली डिजाइन इक्वेशन इन दिस केस. This is the only design equation. So will for given value of V, for given value of battery voltage that we are employing and the meter, we have to calculate the value of RSC so that your meter, it should satisfy this condition. We will choose the suitable value of RSC for given value of V and RM that satisfy this equation. It is the only design equation. Is it fine to all of you? Yes. Yes, sir. Okay, I'm closing my discussion for today here, and we'll discuss remaining thing on the next turn. Okay, if anybody is having any question regarding this type of ohmmeter or the series type of ohmmeter, you can ask on the next turn. Okay. Yes. Now respond your roll call, please.